Welcome to my YouTube channel. Let's start with new video. In my previous video, I was talking about Lost Spring. I was talking about stories of stolen childhood. Do you know anything about Lost Spring? Yes. Our title is symbolic. Our title has associated with the stories of stolen childhood stories because it has two stories in our lesson, right? Our title is well known for the first stage, well known for the beginning, well known for the energy, freshness, newness, right? The same way, our childhood is well known for the first stage, beginning, freshness, playfulness, fun, right? Everything in new. Yes, you must have watched the video. In the first case, we watched that how Sahib Alam, who came from Bangladesh in 1971, scrounged something in the garbage dump in hope of getting some gold, silver, coin or note as well. He was very curious to get good education. Okay, he was very curious to get good education, but because of his poverty, he couldn't afford that education. See, lack of educational opportunity, unhygienic conditions, lack of medical facilities, lack of good shelter are some basic need of our children. As I said, those country, state, society and parents can't cater and fulfill these basic need of our children. It means you are poor. Country is in poor hand. Leadership is poor because they are not capacity to frame such policies which can eradicate that evil, that poverty from the society. See, together policemen, lawkeepers, bureaucrats and politicians has put so much baggage on the children today. And before they become aware to put them down, they accepted it as naturally as their father had. Yes, dear student, our society has been divided into two parts. Okay, upper class and lower class. Upper class and the rich class cater and enjoy these basic facilities very easily. But this strata of our society always remain in the poverty. They can't afford all these things easily. That's why this lesson provoke that we have to cater these basic facilities to the children. Educational opportunity is very important to all children. The same you can see with the help of this title that our children has lost their childhood. The period which must be dedicated to the education, playfulness, freshness, newness, they have lost. They condemn them. It has condemned them to stay in the poverty. They are collecting the garbage, right? In the first case, you saw that how Sahib Alam collect the garbage. Although garbage is not profitable professions for them, still they are doing. And afterward, you saw that how he was working at the tea stall, okay, which points toward the child labor. Yes, Anish Jung arise again one more questions to eradicate the child labor. Although Indian Constitution has passed this law many years back in 1986 and 87, still it is flourishing in the country, which is very much shameful. And in case of Mukesh, you saw that how Mukesh wanted to become a motor mechanic, but at this right moment, Mukesh and like him 20,000 children were working in the glass Bengal industry in the DG cell without air and light on high temperatures. If law enforced, all will come out of that place. Okay, they were continuously working with their parents in the flickering lights of oil lamp, where they lose their eyesight before they become the adult. Yes, dear student, through this lesson, Anish Jung wants to draw the attention of the government to give equal opportunity of education to all the children of the country who have lost their childhood in the poverty, and wants to draw the attention to eradicate and remove this child labor from the country. Although
There is a law against this, but strict implementation is must to eradicate the child labor. Alright, along with these two evils of the society, there are so many other evils like social imbalance, economic imbalance, political imbalance should be uprooted from the society to make country prosper and great. Yes, dear student, you will stay with me till the end of this video to know more about Mukesh, his family, his professions, and know how he come out of this industry. Yes. Yes, dear student, welcome to the fourth part of this video. See, Sabita, a young girl in a draping dress. There is a young girl, नौजवान लड़की जिसका नाम सबीता है, उसने एक ड्रैप सी डल कलरलेस पिंक ड्रेस पहनी है. Sits alongside an elderly woman, soldering pieces of glass. कि वो कांच के टुकड़ों को जोड़ती हुई एक वृद्ध महिला के साथ बैठी है. As her hands move mechanically like the tongs of a machine, और उसके हाथ मानो मशीन के चिमटों की भांति यांत्रिक ढंग से चलते. आई वंडर, राइट, मुझे हैरानी है. आई एम वेरी मच वंडर, सरप्राइज टू सी इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स, कि क्या वो चूड़ियों की पवित्रता के बारे में जानती है. शी हेल्प्स मेक, जिसको बनाने में वो सहायता करती है. इट सिंबलाइजेस एन इंडियन वुमेन सुहाग और स्पेशियसनेस इन मैरिज. यह भारतीय महिला के सुहाग और विवाह, मैरिज के सौभाग्यों का प्रतीक, सिंबल है. हाउ, सी It will dawn on her suddenly one day. इस बात का पता उसे अचानक एक दिन लगेगा. When her head is draped with a red veil, जब उसके सिर को लाल घूंघट के साथ ढक दिया जाएगा. Her hands dyed red with henna, right? उसके हाथों को मेहंदी से लाल कर दिया जाएगा. And red bangles rolled onto her wrist, और उसकी कलाइयों में लाल चूड़ियां चढ़ाई जाएगी. She will then become a bride. तब वो एक दुल्हन बनेगी. Like the old woman, ठीक उस बूढ़ी महिला की तरह. Beside her, जो उसके साथ बैठी है. Who became one many years ago, जो बहुत साल पहले दुल्हन बनी थी. She still has bangle on her wrist, कि उसकी कलाइयों में अभी भी चूड़ियां हैं. But no lights in her eyes, परंतु आंखों में रोशनी नहीं है. एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया. She says in a voice drain of joy. Drain, प्रसन्नता रहित आवाज में वो कहती है कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया. She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime, कि उसने अपने सारे जीवन में एक बार भी पेट भर भोजन नहीं खाया. That's what she has reaped, कि उसने बस यही कुछ कमाया है. Her husband, उसका पति, an old man, बूढ़ा आदमी with a flowing beards, लंबी दाढ़ी वाला, says, कहता है, I know nothing except bangles. ये बैंगल के सिवा मैं कुछ नहीं जानता. All I have done is, कि जो मैं कुछ कर पाया, is make a house for the family to live in. वो अपने परिवार के रहने के लिए एक घर. Hearing him, उसको सुनकर, one wonders, एक हैरानी होती है. If he has achieved, क्या उसने वो प्राप्त कर लिया है. What many have failed in their lifetime, राइट, जो बहुत सारे अपनी सारी उम्र नहीं कर सके. He has a roof over his head, कि उसके सिर के ऊपर छत है. ओके. The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. The cry of not having money to do anything, किसी भी काम को करने के लिए पैसे की कमी की चीख. Except carry on the business of making bangles, चूड़ियों के व्यापार को चलाने के अतिरिक्त. ओके. Not even enough to eat, यहाँ तक कि खाने के लिए भी पैसे की कमी का रोना, चीख. Rings in every home, प्रत्येक घर में गूंजती है. The young men echo the lament of their elders, जो नौजवान है वो भी बड़ों की भांति विलाप करते हैं. Little has moved with time, it seems, in फिरोजाबाद. ऐसा लगता है कि फिरोजाबाद में बहुत कम ही बदलाव हुए हैं. Right? Years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. It appears that वर्षों के, years के mind-numbing, सी मस्तिष्क को सुन कर देने वाले कठोर परिश्रम ने initiative, सी पहल करने की शक्ति और ड्रीम देखने की योग्यता को समाप्त कर दिया है. Dear student, this is very interesting paragraph here. See, why not organize yourself into a cooperative? I ask a group of young men, right? मैं युवा लोगों के एक दल से पूछता हूं कि आप स्वयं को सहकारी समिति में संगठित क्यों नहीं होते.
who have fallen into the vicious circle of the middlemen, जो बिचौलियों के हाथों में पड़ चुके थे, कुचक्र में पड़ चुके थे, who trapped their father, जिन्होंने उनके पिता और उनके पूर्वजों को फंसाया था. Even if we get organized, we are the one who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal. they say, वो कहते हैं, दे रिस्पॉन्ड करते हैं कि हम अगर इकट्ठे हो भी जाते हैं तो हम ऐसे लोग हैं जिन्हें पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, पीटेगी, एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और अवैध कार्य करने के लिए जेल में घसीट दिया जाएगा. देयर इज नो लीडर अमंग देम, उनमें कोई भी लीडर नहीं है. नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, कि उनमें ऐसा कोई नहीं है जो चीज़ों को अलग से दिखाने में उनकी सहायता कर सके. देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिता भी उतने ही थके हुए हैं जितने वे स्वयं. दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पायरल that moves from poverty to apathy, apathy to greed, greed to injustice, कि वे लगातार इस चक्र के बारे में बोलते हैं. राइट, दिस इज द स्पायरल, जो पॉवर्टी से, निर्धनता से अपैथी, भाव शून्यता, फिर भाव शून्यता से लालच, और लालच से अन्याय की ओर बढ़ता जाता. लिसनिंग टू देम, उन्हें सुनकर आई सी टू डिस्टिंक्ट पार्ट, मुझे दो स्पष्ट संसार नजर आते हैं. वन ऑफ द फैमिली, एक परिवार, कॉट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी के जाल में जकड़ा हुआ है. बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन दे आर बॉर्न, जिस जाति में पैदा हुआ है उसके धब्बे के बोझ से लदा हुआ है. अदर द पुलिसमैन, द सेकंड बॉडी, दूसरा संसार. सी, इट हैज पुलिसमैन, कीपर्स ऑफ लॉ, राइट, लॉ के रखवाले, कानून के रखवाले, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस आर देयर. टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड, कि ने सब ने मिलकर, इकट्ठे होकर बच्चों के ऊपर बोझ लाद दिया है. राइट, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसे वो नीचे नहीं उतार सकते. बिफोर ही इज अवेयर, इससे पहले कि वो सचेत हो. ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर. राइट, वह अपने पिता की तरह स्वाभाविक रूप से इसे एक्सेप्ट कर देते हैं, स्वीकार कर देते हैं. टू डू एनीथिंग, कुछ और करना, राइट, एल्स would mean to dare, उसका मतलब है कि साहस करना. एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, साहस करना उनके लालन पालन का हिस्सा नहीं है. When I sense a flash of it in मुकेश, परंतु जब मैंने मुकेश में साहस की झलक महसूस की, आई एम चीयर, मुझे खुशी हुई. आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, वो दोबारा कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ. ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न, वो एक गैरेज जाएगा और सीखेगा. बट द गैरेज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, परंतु गैरेज उसके घर से काफ़ी दूरी पर है. आई विल वॉक, ही इंसिस्ट, वो कहता है कि मैं वॉक करूँगा, मैं पैदल जाऊँगा. ओके, डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, आई आस्क्ड. या नरेटर उससे पूछती है कि क्या तुम वायुयान या प्लेन उड़ाने का भी स्वप्न देखते हो. ही इज सडनली साइलेंट, अचानक वो चुप रहता है. नो, ही सेज, स्टारिंग एट द ग्राउंड, जमीन की ओर घूरता हुआ, देखता हुआ, टकटकी लगाते हुए वो कहता है कि नहीं. इन ए स्मॉल मर्मर, कि उसकी थोड़ी सी जो मर्मर है, गुनगुनाहट है, देयर इज एन एम्बैरेसमेंट, उसमें कुछ शर्मिंदगी थी. दैट हैज नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, जो अभी खेद में परिवर्तित नहीं हुई थी. ही इज कंटेंटेड टू ड्रीम ऑफ कार्स, कि वो कार के ड्रीम से, स्वप्न से संतुष्ट है. दैट ही सीज हॉटलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, जिसे वो अपने शहर की गलियों में, अपने टाउन के, कस्बे की या नगर की गलियों में तेजी से दौड़ते हुए देखता है. फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, कि वैसे भी फिरोजाबाद के आकाश में बहुत कम वायुयान उड़ते हैं, एरोप्लेन उड़ते हैं. That's it, dear student. That was your lesson. It has so many things to learn. See, it has great message to all of us. The lost spring. See, lost spring. Because this is the lesson about children, where child must take enjoyment in every respect, because spring is the symbol of energy, freshness, newness. All right. But here you can see that how there is child labor, the lack of employment, illegal migration, and so many other things, that how they have been engaged themselves in many petty work, right, which condemn them to stay in the poverty. Yes, dear student, that's it. That was your lesson number 2, Lost Spring. See you soon in the next video.